করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় এমন দয়ালু প্রভু কে বা কোথায় পায় এমন দয়ালু প্রভু কে বা কোথায় পায় গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ হরিস্থানে নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলে নরোত্তমে আর এ অধমে কর দয়া আপনার বলে জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর এই প্রভু আপনার সঙ্গে চলে যান জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় গুরুদেব 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 আপনারা না এই ছেলেরা ওইদিকে যান এখানে কি হিন্দি ভগবদ্গীতা কোথাও রেখে দিয়ে গেছিলাম জানেন কি আমি পাচ্ছি না ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুন্মিলিতাং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सर्वसती विष्णु गोस्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितां येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः ओम नमो विश्वरूपाय विश्वस्थितन्ते हेतवे विश्वरूपाय विश्वाय श्री रामचंद्राय ते
नमः। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविंदमादिपुरुषां तमहं भजामि। हरे कृष्णा। अब सब लोग को बहुत बहुत बधाई हो। आज दशहरा है, विजयदशमी है, भगवान श्री रामचंद्र की जय उत्सव है, विजय उत्सव है आज। और आज के दिन में अर्थात आज से लाखों लाखों साल पहले अर्थात त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जो मर्यादा पुरुष है, उन्होंने रावण को वध किए थे, जो इसका 10 सर था, दशानन रावण को वध किए थे। तो he had beheaded this the Ravana who had 10 heads on this very auspicious day, and Ravana is the emblem of 10 faults, or we can say the 10 defects that we all of us have. And these 10 defects are ahankar, akuranatva, अन्याय, काम वासना, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, मोह, स्वार्थ. The first is that ahankara means ego. So we have all of us have ego. Then we have no mercy. We are very cruel. The cruelty. So Ravana had so much ego that he had never thought anyone to be better than him. He would think himself the most important person of the whole universe. Rather, he would think himself as God. Because he wanted to dominate everything, he wanted to enjoy everything, and he would think himself as the Lord of everybody. Because this is a demonic nature. So this is ego is the first defect and or bad quality. And the second is akaranatva. Akaranatva is one who has no karuna. Akarunatva. Akaruna. Karuna means there is one who has no mercy, who is very cruel, the cruelty. Then anyaya. Anyaya means injustice. Then it is kamavasana, the last. Then krodha, anger. Then lobha, greed. Then mada, means excessive pride and arrogance. Then matsarya. Matsarya means envy or jealousy. And moha is attachment, swartha, selfishness. So these 10 bad qualities are the 10 heads of Ravana. तो रावण के 10 सर हैं, दशानन हैं, तो उनके 10 उनके खराब जो गुण हैं वो हैं। वो खराब गुण क्या है? पहला है कि सर्वप्रथम है अहंकार। अहंकार है। फिर अकरुणत्व, जिसका पास कोई करुणा बोल के कुछ है नहीं, करुणा के लेश मात्र भी नहीं है। और तीसरा है कि अन्याय, जिसको पास कोई न्याय काम नहीं करते हैं, जो भी करते सारे अन्याय कार्य करते हैं। और काम वासना, जिसका अंदर में जिसका जड़ है काम वासना, भोग करना, अपने इंद्रियों से भोग करना। क्रोध, फिर लोभ, फिर मद मतलब गर्व करना, अपने अधिकार, अपना जो क्षमता का ऊपर बहुत गर्वित होना। और फिर मात्सर्य मतलब ईर्ष्या करना, हिंसा करना। और स्वार्थ मतलब स्वार्थी होना, जो अपना फायदा छोड़ के और कुछ भी नहीं सोचता। जो भी कुछ चाहिए उनका अपना फायदा कितना है, बस अपना फायदा है तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी कहते हैं। तो so these 10 bad qualities are the emblem of evil. And today is a very important day because Ramchandra had vanquished the Ravana. Ravana had been killed by Bhagavan Sri Ramchandra, and Ramchandra had killed Ravana, means he had killed the 10 bad qualities of Ravana. And we have also 10 bad qualities. We have also, we are very egoistic person. We have also ego. We have cruelty. We have
injustice, lust, anger, greed, excessive pride and arrogance, envy, attachment, then selfishness. So we have these 10 bad qualities, and because of these 10 bad qualities, we cannot devote Krishna. And instead of that, we all oppose Krishna, the Supreme Personality of Godhead. So we become atheists. We start denouncing the God, the supremacy of the Supreme Lord. We don't accept Krishna or Ramchandra as the Supreme Personality of Godhead. Because this, as long as these 10 qualities are concerned, we can never accept God. We think ourselves we are God. So this is the situation. This is the position of demoniac people. Those who have the demoniac nature, that people, those who are having demoniac nature, they have this kind of 10 bad qualities. So we should pray to Ramchandra, the Supreme Personality of Godhead, one who had established the dignity and purity of dharma. The dignity and purity of dharma had been established by the Maryada Purush Ramchandra, because he's a Supreme Personality of Godhead, and he can do that, because without Krishna, without the Lord, no one can establish the dharma. So dharma, the dignity, the purity had been established by Ramchandra by vanquishing the demon Ravana. The name of Ravana means one who hears this name start weeping, crying, lamenting, feel immense depression. One who hear the name of Ravana start feeling depressed, become scared. So the name of the Ravana is so much, this name of the Ravana is so much inauspicious and so horrific. So in this particular festival, because Ravana was killed, so everybody is overjoyed. This is a festival of joy, of victory of evil. So we should celebrate this day of Vijayadashami, and that means that we should celebrate this festival in our heart, because our heart is filled with these 10 bad qualities. हमारा जो हृदय है, चित्त हैं, वहां पर 10 प्रकार के अनर्थ बसे हुए हैं. तो जब तक इसको हम साफ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भगवान को पुकार नहीं सकते. भगवान वहां पर बैठेंगे कैसे? तो भगवान को बैठाने के लिए पहले जो हमारा चित्त है, हृदय है, उसको साफ करना पड़ेगा. और हम खुद साफ नहीं कर पाएंगे. हम खुद अपना we have no ability to cleanse this heart. To clean the heart, we need the help of Krishna, Ramchandra. So we should pray to Ramchandra, Bhagavan Ramchandra, please you come and just clean the heart, because I myself cannot clean the heart, because I have not that ability. We may think that I will do it, but we cannot do it, because we have no ability to do that. We need complete mercy of the Lord. Through the mercy of the Lord, this heart will be completely purified. Once the heart is purified, the Lord is automatically, He is there. He is actually there in every moment. But we cannot feel Him, because His heart is shrouded by different types of thick layers of material desires. And because of that, we cannot realize the Antaryami, the Paramatma is residing, is dwelling in our heart. That realization will come when our heart becomes totally purified. So when will that heart will be purified? When the heart becomes free from these 10 bad qualities. And that 10 bad qualities are the evil, are the emblem of evil. This evil is in everywhere. Because in Srimad Bhagavad Gita, Krishna has very specifically said in text number 6 and chapter 16,
He says, Dvau bhuto sargo loke asmin deva asura eva cha. There are two types of people in the whole universe. One is one who is having divine nature, and another one is one who is having demonic nature. Huh? The people, those who are having the quality of divine, those who are having possessing the divine nature, and the other persons, those who are having the or possessing the nature of demons. So one is asura and deva. Deva prakriti people, they are naturally, in the mood of serving God. But the people, those who are having the demonic nature, they don't believe in God. Rather, they themselves think they are God. They are everything of the whole universe, including the impersonalist, monist. These people also think themselves as God. So Ravana was so much proud of his own possession and his strength, his ability, and his kingdom, that he thought himself everything, as everything. And he started abhorring the supremacy of Ramchandra, because Ramchandra is having a lot of that beautiful wife and beautiful and very sincere brothers, and he is favored by so many unlimited devotees. So Ravana could not tolerate this. And Ravana means who is having the lasting desire. दिस लास्टी डिजायर, जो काम भावना जिसका पास जितना है ना, वो व्यक्ति उतना बड़ा असुर है. इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रज गुण समुद्भवा, महाशाना महापापमा विध्येनम यह बैरिणीम. Kama esha, krodha esha. The anger emanates from kama, means the lasty desires. And the lasty desire is the place, is a place of demons. So demons are always always try to enjoy through their sensual senses. They want to gratify their senses through their lusty desires. And Ravana had so much, so much absorbed in thinking to enjoy the whole world, whole universe. So he thought that he himself is the God, Lord, he is the controller. Because this lusty desire makes one so much fallen that he can never understand that he is gliding down to the hellish world. And he himself thinks that he is the controller of the universe. So one has to control his lusty desire first of all. So that's why in Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, Kama esha, krodha esha, sama rajaguna samudbhava. Because this kamna, this lusty desire, arise from the passion, the mode of passion. And it turns into the form of anger, the mode of ignorance, tamsik. राजसिक से तामसिक गुण में परिवर्तित हो जाता है. तो पहले काम भावना जो है रजगुणों से पैदा होती है, और काम भावना के बाद वो क्रोध में प्रकट होती है. तो it become transformed into anger, and this is the mode of ignorance. So naturally we are gliding down to the mode of ignorance, and therefore we have to suffer severe suffering. We have to suffer severe pain, severe karma. So that's why we should. So we should be very much aware of it, that how we should stop going down. We should stop gliding down to the hellish nature. So Ravana was dominant. He did not take care of anything of such. He never had believed in Shastra. In Srimad Bhagavad Gita, Krishna has very specifically said that Ya Shastra Vidhi Mustrijya Vartad Kama Karataha Na Siddhim Abapnoti Na Sukham Na Param Gatim.
One who does not abide by the instruction of scriptural instruction, he can never attain perfection of his life. He can never be happy. He can never attain peace. What to speak of perfection? So Ramchandra, Bhagwan Rama, Ramchandra, who is the supreme personality of Godhead himself, had established that dignity, the dignity and the purity of dharma, so that one can follow the scriptural injunctions very thoroughly, and thus they become purified, and they can attain all divine natures. Otherwise, people will be all demons. And today we can see that people don't believe in Shastra, they don't believe in purity. They all are absorbed in thinking, working, executing all mundane activities, through which they start gliding down to the hellish nature. And we can see the whole world is suffering so much because of this problem. So Sri Bhagwan Ramchandra has so kindly appeared to teach us so many things. And out of so many things, today is a very important thing that he had killed Ravana. And killing Ravana means killing the 10 bad qualities. As we had discussed, I will read it once again. It is ego, cruelty, injustice, lust, anger, greed, excessive pride and arrogance, envy, attachment, and selfishness. So today is the festival of joy, of victory over this evil. One who becomes completely free from these 10 bad qualities, automatically he becomes purified. And today is the festival of purity. The festival of purification. The process of purificatory process is Krishna consciousness. And this Krishna consciousness can make everybody pure. And when we become pure, we can have the favor of God. We can see the God. We can serve God so intimately. So Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janatyash Vairagyam Gyanam Chayad Ahutikam. Simply by serving, simply by discharging the devotional service, one can attain Gyan and Vairagya. The knowledge and renunciation can be attained simply by discharging pure devotional service. And by discharging the pure devotional service, one can attain Jnana and Vairagya. And when one becomes completely devoted to Krishna, he can attain all beautiful and most exalted divine qualities. So this is very important, how we should absorb, or we should engage, we should involve ourselves to service of Krishna. In Bhagavad Gita, Krishna says in 16 chapter 16, 18, text number 18, Ahankara balam darpa kamam krodham cha sangsritaha mama atma paradeheshu pradishantaha abhasuyakaha. He says that bewildered by false ego, strength, lust and anger, the demons become envious of Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in bodies of others, and blaspheme against the real religion. So naturally, one becomes overproud, becomes one who is having the false ego, and they become proud of their strength, ability, lusty, and they are lusty people. They have lusty quality and anger. They're very much angry about everything. So they are naturally against of God. So they don't accept God, and what they think themselves, they are God, and they always oppose the Paramatma who is situated in each and every body. So this is the quality of the demon.
Then again Krishna says in 16th chapter, text number 10, that kamasrita duspuram dambha mana madannitaha mohad grihitva asad grahan prapattante asuchi vrataha. Kamasritaha. যারা অসুর, যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা কামের দ্বারা আশ্রিত। They have taken shelter of lusty desire. The demon has taken, the demon means they have taken the shelter of lusty desire. কামনা বাসনার মধ্যে যাদের মন সবসময় বিচলিত, তারাই হচ্ছে আসুরিক ভাবাপন্ন। এই জন্য কামাশ্রিতা দুষ্পুরম, দুষ্পুরম, আর ওরা সবসময় অসন্তুষ্ট। যারা সবসময় ভোগের মধ্যে থাকে তারা কোনোদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। দুষ্পুরম দম্ভ, এবং তারা খুব দাম্ভিক হয়। মানা, মানা মানে তারা অত্যন্ত নিজের মান সম্মান নিয়ে সবসময় চিন্তা করে। তারপরে মদন্বিত, তারা অত্যন্ত গর্বিত বোধ করে নিজেকে, সবকিছুতে তার গর্ব দেখায়। মোহাত, মোহাত মানে মোহ, মোহ মানে হচ্ছে শরীর, অ্যাটাচমেন্ট। আমি শরীর, আমার শরীর, আমার ঘর, আমার পরিবার, আমার রাজ্য, আমার লঙ্কা, আমার স্বর্ণ লঙ্কা, আমার, এই ধরনের অ্যাটাচমেন্ট থাকে, আসক্তি থাকে, তীব্র আসক্তি। গৃহীত্বা আসৎ, আসৎ মানে যেটা অনিত্য, অনিত্য জিনিসের প্রতি প্রচন্ড আসক্তি। এখানে সবই অনিত্য না, here everything is impermanent and we are so much absorbed all stuffs of impermanent world. We are so much attached to everything which are basically impermanent, temporary, and we are so much attached to that. So that's why you are all become infuriated, because we can enjoy. As long as we have attachment, we are bound to suffer. So you should not have attachment. We must have affection. So it is said that mohat grihitva asad grahan prapattante asuchi brata, asuchi brata. He become determined following all kind of activities which is simply impure. So Krishna says that taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus illusioned, are always sown to unclean work attracted by the impermanent. এখানে সবকিছুই অসৎ, অসৎ মানে অনিত্য, যেটা নিত্য নয়, যেটা নিত্য নয় সেটাই অসৎ, অসত্য। তো অসত্য বা অনিত্য জিনিসের প্রতি যদি আমাদের চাওয়া পাওয়ার বাসনা, কামনা বাসনা থাকে, সেটা কিন্তু দুর্গুণই হবে। এটা আসুরিক ভাবাপন্ন, जो आसुरिक हैं, असुर हैं, असुर लोग ये पूरा जो जगत को भोग दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ भोग करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है मैं ही सब कुछ का मालिक हूं, बस आप खुद को मालिक समझते हैं सब कुछ का, और शेष में क्या सोचते हैं, मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ हूं। जिसका पास बहुत पैसा है, बहुत सामर्थ्य है, क्षमता है, सब कुछ है उनके पास, भरा हुआ है, वो व्यक्ति खुद को भगवान सोचते हैं, बोलेंगे नहीं, सोचते हैं, और उसके बाद सोचते 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 तो बोलना शुरू कर दिया, अरे क्यों भगवान बोल के कुछ है नहीं, हम ही भगवान है, हम तो इतना सब कुछ करके दिया है, हम भगवान है। और लोग बोले उनको आप भगवान जैसे ही हो, बस उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब हर चीजों में वो अपना विचार करते हैं और फायदा देखते हैं, मेरा फायदा किसमें होगा, जिसमें मेरा फायदा हो वो काम मैं करूंगा, जिसमें फायदा नहीं तो मैं करूंगा नहीं, तो इतना स्वार्थी बन जाते हैं। तो वो रावण हर दिन मांस खाते थे, पशु की मांस और मानव की मांस, মানুষের মাংস খেত, আর রাক্ষস তো রাক্ষস কি খানা খায়, রাক্ষস সব খায়। তো রাক্ষস, राक्षस प्रकृति रावण और मानव मनुष्य का मांस खाते थे और पशु का मांस खाते थे।
तो उसका अंदर में क्या भावना होगा फिर, बराबर ना। तो इसीलिए स्वभाव जो है दो प्रकार का होता है, एक दैव स्वभाव, एक आसुरिक स्वभाव। एक आसुरिक स्वभाव जो है उसमें अहंकार, दर्प, मोह, मद, क्रोध, लोभ, काम, ये सारे चीज भरा हुआ रहता है। और हम सब लोग में 10 जो अवगुण है, ये 10 अवगुण भरा हुआ है। तो इसीलिए हमको जो करना है कि जो प्रार्थना करना है कि हे भगवान रामचंद्र, हे हरि, हे नारायण, हे कृष्ण, हे गोविंद, ये जो 10 प्रकार जो अवगुण हैं, इस 10 अवगुण से हमको मुक्त कीजिए। क्योंकि हम खुद चाहें तो कर नहीं पाएंगे। अगर हम खुद चाहें कि इस गुणों से हम निकले, हमको छुटकारा मिल जाएगा, तो हम नहीं कर पाएंगे, खुद से नहीं होएगा। हमको जो करना है वो भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम की चरण का आश्रय लेना होगा। भगवान चरण आश्रय करने से, भगवान का कृपा से ये सारे अनर्थ निकल जाते हैं। हमारा पास कोई ताकत या औकत या क्षमता, सामर्थ कुछ भी नहीं है। वो सब, वो सामर्थ्य या क्षमता, এই জন্য আজকে যে দিনটা বিশেষ করে, এই দিনটা আনন্দের দিন। আনন্দের দিন এই জন্য ভগবান শ্রী রাম, যিনি মর্যাদা পুরুষ, উনি রাবণ, অর্থাৎ রাবণের মধ্যে 10টা, রাবণের 10টা মাথা ছিল। তো তো 10টা মাথা কি কি? 10টা মাথার মানেটা কি? 10টা মাথা মানে একটা মাথা হচ্ছে অহংকার, প্রচুর অহংকার, তাই না? একটা মাথা অহংকার আছে। তো আরেকটা মাথা কি আছে? একটা মাথা অহংকার, আরেকটা মাথা হচ্ছে গর্ব। গর্ব, নিজেকে আমি অনেক কিছু। আরেকটা মাথা হচ্ছে অকুরণাত্ব। অকুরণাত্ব মানে যার মধ্যে করুণা বলে কিছু নেই, করুণা বলে কিছু নেই, মানে কঠোর ব্যক্তি, নিষ্ঠুর। निष्ठुर बोला, निष्ठुर, दयाहीन, निष्ठुर व्यक्ति को अकरुणत्व कहा जाता है। तो पहले है ईगो, अहंकार, बोलिए अहंकार, निष्ठुरता, अन्याय, काम वासना, क्रोध, लोभ, मद। मद मतलब गर्व होना, अपना जितने सारे उनका अधिकार में है, जो भी कुछ उनका पास, उससे बहुत गर्वित होते हैं। दाम्भिक होना, दाम्भिक, दाम्भिकता। और मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, किसी का अच्छा देखने से जल जाते हैं, ज्वलन आता है उनका। फिर मोह, मोह मतलब आसक्ति। उसके बाद स्वार्थ, स्वार्थ माने वो कोई भी काम जो भी करेगा ना, वो अपना अपना फायदा देखेगा, अपना फायदा जिसमें नहीं है वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो रावण अपना फायदा सोचते थे, जिसमें हमारा फायदा वही हम देखेंगे, वही श्रेष्ठ, वही धर्म है, वो सब कुछ है। तो ये जो आसुरिक प्रवृत्ति लोगों में, ये सब 10 प्रकार के अवगुण रहता है। और ये 10 प्रकार जो अवगुण है, और राम का 10 सर है, 10টা মাথা। তো আমাদের মধ্যে সব আছে কম বেশি, more or less we are having this bad qualities. So we, if we want to become free completely, stay in bad qualities, then we have to surrender to Krishna or Ramchandra, the supreme personality of Godhead. There's no any way out. So this is the main root of uh, disease, the defects. And out of these 10, the calm vasana, the lasting desire dominates. কাম বাসনা থেকে এই বাকিগুলোর উৎপন্ন হয়। আহম মম অভিমান, আহম মম, এই আমি আমার, এই যে অভিমানটা
हाँ, ये आमी शरीर, I am the body. This concept, this wrong conception, misconception or bodily conception is the root cause of all these 10 defects or 10 bad qualities. Is the most illustrative book that can help us from all around to become free from this misconception that we are these bodies. This misconception has to be uprooted through understanding properly uh, the teachings of Srimad Bhagavad Gita from the authoritative way. So if we can understand this Bhagavad Gita from by the help of the bona fide spiritual master, then we can come out from this bodily concept of life. This body the whole universe belongs to life, and thus, and that suffering is limitless. So let us pray to the Ramchandra, Krishna, Hari, the Supreme Personality of Godhead, that let these 10 bad qualities become completely removed, become completely uprooted by their divine mercy, and we can dedicate ourselves, or we can emerge ourselves to the service of the Lord, devotional service of the Lord. And that is what Chaitanya Mahaprabhu says, that Jive Swarup hoy Krishna Nityadas. And Chaitanya Charitamrita, it is said that Atmaindriya Pritivancha, bolun shobai, Atmaindriya Pritivancha tare bole kam, Krishna Indriya Pritivancha धौरे प्रेमो नाम. दो चीजें बस, इस दोनों में, ये दोनों छोड़ के और बाकी तीसरा कुछ है नहीं. प्रेम और काम. जब तक ये प्रेम जो शब्द जो है, ये शब्द पूरा दुनिया में सुनते रहे, प्रेम प्रेम प्रेम. वास्तव में यहां पर कोई प्रेम, इस कामना को प्रेम बोल के हम सोचते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. कामना को प्रेम समझते हैं. There, this is a cause, all this is cause of काम वासना के कारण. और वो वासना को चरितार्थ करने के, पूर्ण करने के लिए हमको एक शरीर मिला. यहाँ पर ठाकुर जी का सेवा करेंगे. वो काम वासना है, वो अपना इंद्रिय के लिए भोग करने के लिए सोचते हैं, वो काम वासना हो गया. अगर वो भगवान को, वो काम वासना अगर भगवान का सुख के कारण हो, सुख के लिए हम अर्पण कर दें, तो प्रेम हो गया. फिर बस इतना सही है. मतलब आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा, the desire to please or gratify senses is called calm, sensual pleasure, and endeavoring to please the senses of Krishna is called love. Means gratifying our senses is called lust, and gratifying the senses of Krishna is called love. ভগবানের ইন্দ্রিয়কে সুখ দেওয়াটাই হচ্ছে প্রেম, আর নিজের ইন্দ্রিয়কে সুখ দেওয়াটাই হচ্ছে কাম. একটুখানি কথা এটা বুঝে নিলে, এটা কাম কি এটা প্রেম, না এটা আমার নিজের সুখের জন্য চিন্তা করছে, আমার ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য চিন্তা করছে, তাহলে এটা কাম. না এটা ভগবানের সুখের জন্য, তাহলে এটা ভক্তি, এটা যে প্রেম. সিম্পল. এই দুটো জিনিসটাকে ভালো করে আমাদেরকে অ্যানালাইজ করতে হবে. উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দি টু থিংস. ওয়ান ইজ কামা অ্যান্ড প্রেমা. Kama means lust and prema is love. Lust is called when we try to gratify our own senses, or even not only that, we are even when think to please our own senses, also lust.
But when we think to gratify Krishna's senses, then it is love. When we execute all devotional services to please Krishna's senses, then it becomes love. Practically, then it is love. Otherwise, it is lust. Lust confines us into the periphery of bondage. Love gives us unlimited pleasure. So now we have to decide what we want, what we should want. We want pleasure, or we want to suffer. If we want to suffer all type of miseries, then we have to get those demonic natures, and through which we have to suffer. And if we want to have unlimited pleasure, then we have to serve Krishna, we have to serve Ramchandra, we have to follow the footsteps of previous acharyas, those who had surrendered themselves, those who had absorbed themselves in the devotional service of the Lord. So decision is ours, choice is ours. So brother, let us choose the best thing for all of us, and the choice should be to surrender ourselves to the service of Krishna. And let us pray to Krishna, let us pray to Ramchandra, that these 10 bad qualities, the emblem of evil, become completely vanquished, and so that we become free from these 10 bad qualities, and you can attain the all divine qualities through the presence of Krishna, through the service of Krishna, through the service of Ramchandra. Thank you so much. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhayavacha patitana papanebho vaishnavabho namo namo. আজকে যে উৎসবটি রাম নবমী, এই দশেরা, আজকে যে উৎসবটি দশেরা মানে হচ্ছে 10 দিন, দশমীর দিন ভগবান রামচন্দ্র আজকে উনি রাবণকে বধ করেছিলেন এবং লঙ্কা জয় করেছিলেন, এবং 10 দিন এবং 10 মাথা রাবণকে জয় করেছিলেন, হত্যা করেছিলেন বা বিনাশ করেছিলেন। তো এই 10টা ব্যাড কোয়ালিটি, অবগুণ আমরা শুনলাম। তো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই 10টা অবগুণ আছে। তো আমরা ভগবান রামচন্দ্রের কাছে এটাই প্রার্থনা করি, কৃপা প্রার্থনা করি, ভগবান আমার এই 10টা অবগুণ আপনি কৃপা করে এদেরকে আপনি বিনাশ করুন, আর আমাকে আপনার সেবার মধ্যে আমাকে সবসময় যুক্ত রাখুন। এটাই হোক আমাদের এই দশমীর মূল প্রার্থনা। আর এই প্রার্থনা তো আমরা প্রত্যেকদিনই করি, আজকে বিশেষ দিন, এই বিশেষ দিনকে কেন্দ্র করে আমরা ভগবানের কে স্মরণ করব। আর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটি কীর্তন করেছেন, সেটা দক্ষিণ ভারতে যখন গিয়েছিলেন রামেশ্বরম এবং দক্ষিণ ভারতে ভগবান রামচন্দ্র দর্শন দিয়ে কাবেরী নদীর সামনে উনি এই কীর্তনটা করেছিলেন। এটা আমরা এখন করব। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मम। राम राघव राम राम राघव पाहि मम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलुन हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. जोड़े Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Krishna Keshava Krishna Keshava Rakshamam, Rama Raghava Pahimam. बोलून Krishna Keshava Krishna Kesava Rakshamam, Rama Raghava Pahimam. Krishna Keshava Krishna Keshava Rakshamam, Rama Raghava Krishna Keshava Rakshamam, Rama Raghava Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. बोलून बोलून जोर से बोलिए. Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Krishna सुदर्शन बाबू एक मिनट आपको दर्शन হবে. Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram